तर्पयन्तं कराद्यै सरौगान् कलाभिः सुधास्त्राविणीभिः निजैरोषधि तर्पयन्तं कराद्यै सरौगान् कलाभिः सुधास्त्राविणीभिः दिनेशांशु सन्तापहारं द्विजेशं दिनेशांशु सन्तापहारं द्विजेशं शशाङ्कस्वरूपं गणेशं नमामः शशाङ्कस्वरूपं गणेशं नमामः। प्रकाशस्वरूपं नमो वायुरूपं विकारादिहेतुं कलाधारभूतं प्रकाशस्वरूपं नमो वायुरूपं विकारादिहेतुं कलाधारभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः। प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धराचारिरूपं दिगीशादिरूपं प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धराचारिरूपं दिगीशादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुरूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नता स्मः सदा विश्वरूपं गणेशं नता स्मः। त्वदीये मनस्थापयेदङ्घ्रियुग्मे स नो विघ्नसङ्गातः पीडां लभेत त्वदीये मनस्थापयेत् अङ्घ्रियुग्मे स नो विघ्नसङ्घातः पीडां लभेत लसत्सूर्यबिम्बे विशाले स्थितोऽयं लसत्सूर्यबिम्बे विशाले स्थितोऽयं जनोध्वान्तपीडां कथं वा लभेत जनोध्वान्तपीडां कथं वा लभेत। वयं भ्रामिताः सर्वथा ज्ञानयोगात् अलब्धस्तवाङ्घ्रिं बहून् वर्षपूगान् वयं भ्रामिताः सर्वथा ज्ञानयोगात् अलब्धस्तवाङ्घ्रिं बहून् वर्षपूगान् इदानीमवाप्तः तवैव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराद्य प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराद्य। एवं स्तुतो गणेशस्तु सन्तुष्टो अभूत् महामुने कृपया परयोपेतः अभिदातुमुपक्रमे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश
ஜெய கணேஷ தேவா. அன்னை உந்தன் பார்வதி தந்தை மகாதேவா. அன்னை உந்தன் பார்வதி தந்தை மகாதேவா. ஜெய கணேஷ ஜெய கணேஷ ஜெய கணேஷ தேவா. அன்னை உந்தன் பார்வதி தந்தை மகாதேவா. कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नूतिभिः सीदसादनम्. யானை முகம் கொண்டவனே தந்தம் ஒன்று உடையவனே. யானை முகம் கொண்டவனே தந்தம் ஒன்று உடையவனே. நெற்றியிலோ சிந்தூரம் எலியன்றோ வாகனம். நெற்றியிலோ சிந்தூரம் எலியன்றோ வாகனம். மோதகமும் பொரியவலும் மிதமும் நைவேத்யம். மோதகமும் பொரியவலும் மிகவும் நைவேத்யம். அருகம்புல் வெற்றிலை மலர்களாலே பூஜையும். அருகம்புல் வெற்றிலை மலர்களாலே பூஜையும். ஜெய கணேஷ ஜெய கணேஷ ஜெய கணேஷ தேவா. அன்னை உந்தன் பார்வதி தந்தை மகாதேவா. ஏகதந்தம் மகாகாயம் தப்த காஞ்சன சந்நிதம் லம்போதரம் விசாலாட்சம் வந்தேகம் கணநாயகம். பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார். பிள்ளையார் பிள்ளையார் பெருமை வாய்ந்த பிள்ளையார். ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை நெஞ்சில் நாட்டும் பிள்ளையார். ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை நெஞ்சில் நாட்டும் பிள்ளையார். ஆறுமுக வீரனுக்கு அண்ணனான பிள்ளையார். ஆறுமுக வேலனுக்கு அண்ணனான பிள்ளையார். தீரும் துன்பம் யாவையும் நீக்கி வைக்கும் பிள்ளையார். யாவையும் நீக்கி வைக்கும் பிள்ளையார். ஜெய கணேச ஜெய கணேச ஜெய கணேச தேவா. அன்னை உந்தன் பார்வதி தந்தை மகாதேவா. இன்னல்கள் அகலவே துன்பங்கள் நீங்கவே. இன்னல்கள் அகலவே துன்பங்கள் நீங்கவே. இன்பங்கள் நிறைய என்றும் நன்மைகள் திகழவே. இன்பங்கள் நிறைய என்றும் நன்மைகள் திகழவே. ஆராதனை உனக்கு செய்திடுவோம் நாதா. ஆராதனை உனக்கு செய்திடுவோம் நாதா. எங்கள் குறை தீர்த்தே வரம் தருவாய் கணநாதா. எங்கள் குறை தீர்த்தே வரம் தருவாய் கணநாதா. ஜெய கணேஷ ஜெய கணேஷ ஜெய கணேஷ தேவா. கணேஷ ஜெய கணேஷ ஜெய கணேஷ தேவா. அன்னை உந்தன் பார்வதி தந்தை மகாதேவா. அன்னை உந்தன் பார்வதி தந்தை மகாதேவா. ஜெய கணேஷ ஜெய கணேஷ ஜெய கணேஷ தேவா. அன்னை உந்தன் பார்வதி தந்தை மகாதேவா.
Ganapati Papa, Mangalamurti. Okay, we are happy Ganesh Chaturthi to everybody. We are going to start this Ganesh Vrata Puja. And first I want to do Sankalpam. After the Sankalpam, we'll start the Puja. And after some bhajans, and 7:45 we'll do the Aarti. Aarti and Prasad. Thank you. Om Deve Gayatre Jandaha Pranamya Om Boham Bhavaha Om Savaha Om Maha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam Bargo Devasya Dhimaha Dhiyo Yo Na Prachodayat Om Apaha Jyotiraso Amritam Brahma Bhutbhavatsvaram 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 Suklam Bradaram Vishnum Sadivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyayetas Sarva Vignopashantaye Yasyate Varada Vaktradya Parishadya Parashyatam Vignam Nignan Satam Visvakshenam Damasrahe Harivarom Datsate Sri Govinda Govinda Govindaha Asya Sri Bhagavataha Mahapurushasya Praktamanasya Adya Brahmanaha Vidya Varaharte Hiranyakavarushe Gotirtakande Sapta Kulachalayate Saptarasya Parivrute Unasatabde Uddhare Digbhage अस्मिन् वर्तमाने वहारिकां प्रभवासिष्ट्यां संवत्सराणामध्ये श्रीमते शोभनामकृत संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतो भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यायां स्वाति नक्षत्रयुक्तायां इंदुवासरयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं विशेषण विशिष्टायां अस्यां शोभारितो अस्मिन् दिवसे साय प्रदोषकाले श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी व्रत पूजांग आचार्य मुखेन आचरिष्ये कृतोष्म करिष्यामि अस्मिन् दिवसे सेवा कर्तॄणां गोत्रोद्भवस्य दीप्ति कार्लिकर नाम्न्याः जय जय नाम्न्याः नीना नाम्न्याः ज्योति नाम्न्याः परि नाम्न्याः मूल्या नाम्न्याः सायन्माकाश नाम्रेस्य काश्मसगोत्रोद्भवस्य आभास कुमार नाम चेतना चंद्रकला नाम्न्याः आत्या कुमार नाम्न्याः श्रीकृष्ण कुमार नाम्नस्य ऊर्मिला देवी नाम्न्याः नागलगोत्रोद्भवस्य कृत्तिका नक्षत्र राजा वस्त्रिका नाम्न्येतरपत्न्याः कृत्तिका नक्षत्र राजा वस्त्रिका नाम्न्याः आर्द्र नक्षत्रस्य रामकृष्ण वस्त्रिका नामदेस्य मगा नक्षत्र राघव वस्त्रिका नामदेस्य श्रवण नक्षत्रस्य भावना वस्त्रिका नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रस्य मीरा वस्त्रिका नाम्न्याः समान वशिष्ठ गोत्रोद्भवस्य बाल नारंग नामदेस्य कुसुम नारंग नाम्न्या राजीव नारंग नामदेस्य गीता नारंग नामदेस्य माया नारंग नामदेस्य पर्णा नाम्न्या जपना टीका नामदेस्य तक्कर गोत्रोद्भवस्य संजय नामदेस्य एंडरसन नाम्न्या सुनीता नाम्न्या नील नाम्न्या केशरी नाम्न्या अर्जुन सोनिया नाम्न्याः शतवर्ष गोत्रोद्भवस्य भरणी नक्षत्रस्य लता रामचंद्र नामदेस्य मुस्लिम रंजना रामचंद्र नामदेस्य अस्तान राजीव रामचंद्र नामदेस्य कृतिका नक्षत्र भावना रामचंद्र नामदेस्य काश्यप गोत्रोद्भवस्य उर्मिला पटेल नाम्न्याः कार्तिक पटेल नामदेस्य पात पटेल नाम कृष्ण पटेल नामदेस्य कृपा उषा बेन नाम्न्याः हर्षस गोत्रोद्भवस्य वाणिनी नामदेस्य वाणिश्री नाम्न्याः निहारिका नाम्न्याः दत्तसाय मणिकंठेश्वर नामदेस्य अत्रेय गोत्रोद्भवस्य पोटनस्य कार्तिकेय नामदेस्य शारदा नाम्न्याः मानसा नाम्न्याः नटराज नामदेस्य वेनाल गोत्रोद्भवस्य शिवनागेश्वर नामदेस्य विशाखा नक्षत्रस्य कृष्णकुमार नामदेस्य पुप्पा नक्षत्र दीप्ति नाम्न्या अश्विनी नक्षत्रस्य लक्षया नाम्न्याः सदविशा नक्षत्र सारिका नाम्न्याः अगस्त मशगोत्र पुराण जगन्नाथ श्रवण नामदेस्य स्वाति नक्षत्र चित्रा नाम्न्याः सदन नक्षत्र सुनील कुमार नामदेस्य श्रवण नाम नक्षत्र शिवानी नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रस्य नवीन कुमार नामदेस्य पूर्ण नक्षत्रस्य तिलन कुमार नामदेस्य केटे नक्षत्र महालक्ष्मी नाम्न्याः कुटुंब श्रीमान गोत्रोद्भवस्य मोद्गल गोत्रोद्भवस्य पूर्ण नक्षत्र सुरेश शर्मा विजय शर्मा नामदेस्य सुरेश शर्मा विजय कृष्णमूर्ति शर्मा नामदेस्य पूर्ण नक्षत्रस्य ज्येष्ठ नक्षत्र जयश्री नाम्न्याः मगा नक्षत्र तेजस्विनी नाम्न्याः विष्णु नक्षत्रस्य कृष्णा नामदेस्य विष्णु गोत्रोद्भवस्य अश्विनी नक्षत्रस्य दिलीप लोडी नामदेस्य कृतिका नक्षत्र अमृता विलोडी नाम्न्याः ईशान रेड्डी नाम त्रिभुवन नक्षत्रस्य कार्तिक रेड्डी नामदेस्य हस्ता नक्षत्रस्य
अनीशा नाम्न्या लोनिशा विलोडिना उत्तरानुग्रहस्य केशव विलोडिनां देशस्य मूलानुग्रहस्य विशाख विष्णुरेड्डीनां ज्योतिनाम्न्याः शिवरेड्डीनां देश ज्योति शिवानां देशस्य प्रसाद कुमार कृपा अलियनुग्रहस्य उषा ग्रुप नाम देशस्य पुयनुग्रहस्य सीमानां ग्रुप नाम्न्याः त्रिभुवनुग्रहस्य भरणीनुग्रह चंद्रा नाम्न्याः विष्णुगोत्रोद्भवस्य विक्रम डोकरा नाम देशं नन्नी डोकरा नाम्न्याः सकुटुम्बानां कृत्यारार्गस्राभ्यर्थम् If anybody want to do the sankalpam of the Vrata Puja, please come here to have sankalpam, please. Option malla chestanu. Nenu cheptanu. Allu pilustanu. Sure. श्रीमानस गोत्रो अत्रे गोत्रोद्भवस्य कल्याणी नाम्न्या आयिल्यनुग्रहस्य कटकरासोजातस्य प्रिया सम्पत्नाम् उत्तरनुग्रहस्य सिंहरासोजातस्य रूपी सम्पत्नां देशस्य सकुटुम्बानां क्षत्रियारार्गस्राभ्यर्थम् अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य आप भेजिए जी व्हाट्सएप पे नहीं है व्हाट्सएप नहीं है श्रीमानस गोत्रोद्भवस्य शतविशानुग्रहस्य राजन वर्माणां देशस्य हस्तानुग्रहस्य नन्दिता वर्माणाम्न्याः अनीशा वर्माणां चित्तानुग्रहस्य केशव वर्माणां देशस्य कार्तिकानुग्रहस्य सकुटुम्बानां क्षत्रियारार्गस्राभ्यर्थम् श्री श्री विनायक स्वामी प्रसंकल्प पूजांगाचार्येण आचरिष्ये पुरोच्चरे वंगनशेषनिष्ठायां स्यामजमानस्य कौशल गोत्रोद्भवस्य राजेश मल्होत्राणां धर्मज्ञा आरती मल्होत्राणाम्न्याः सुपुत्राणां कपिल मल्होत्राणां देशस्य रेशम मल्होत्राणाम्न्याः सुपुत्राणां ओम मल्होत्राणां देशस्य लैला नाम्न्याः लैलाना मेहोत्र नाम्न्याः जमानस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य सुखपाल नाम देशस्य धर्मज्ञा कवितापाल नाम्न्याः सुपुत्र्याणां जिया नाम्न्याः जयेश नाम देशस्य जैन मेंगट नाम देशस्य स्वकुटुम्बवर्गाणां क्षत्रियारार्गस्राभ्यर्थम् हरसिद्धि विनायक स्वामी देवताभ्यो नमः सहोदरस्य सुनील मल्होत्राणां कुटुम्बानां क्षत्रियारार्गस्राभ्यर्थम् मानस काश्मीरगोत्रोद्भवस्य अमृतकौर नाम्न्याः राजीव आनंद नाम देशस्य एकता नाम्न्याः गौतम नाम देशस्य सुमित नाम देशस्य सुमानस्य गगन शर्मा नाम देशस्य डिम्पल नाम्न्याः ईशा नाम देशस्य गोपी नाम देशस्य नेम नाम देशस्य स्वकुटुम्बवर्गाणां क्षत्रियारार्गस्राभ्यर्थम् हरसिद्धि विनायक स्वामी प्रसंकल्प पूजांगाचार्येण आचरिष्ये कृतोष्म करिष्यामि ओम गणानां त्वा गणपतिं अवामहे
कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नो दिव्यः सीदसादनम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानम् ध्यानान्ते आसनार्थे आचमनीयम् जलम् समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पादयोः पाद्यम् समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यम् समर्पयामि, मुखे आचमनीयम् जलम् समर्पयामि। आपोहिष्ठामयो भुवस्नान ऊर्जे ददादन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वद आपो जनयधाचनः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्नानीयम् जलम् समर्पयामि। स्वसमेदुदे विश्वतः सोमवृष्णियम् भवावाजस्य सङ्गते ग्रावण्णो अकारिषम् जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रणयोगुम् सितारिषत। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः याश्च पुष्पिणीः पुष्पानो मुञ्चत्वगुंहसः दुरादर्शाम् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीगुम् सर्वभूतानाम् दामिहोपव्यये श्रियम्। शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। पुष्पावती प्रसोवती फलनीरफला उत अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुदः पारयिष्णवः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुष्पमाल्याम् समर्पयामि, पुष्पैः पूजयामि। पवित्रम् प्रजापतेर्यत् सहजम् पुरस्ताद् आयुष्यमग्रम् प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम् बलमस्तु तेजः। रंगपूजां महागणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। पादौ पूजयामि, एकदन्ताय नमः। गुरुभो पूजयामि, शूर्पकर्णाय नमः। जानने पूजयामि, विघ्नराजाय नमः। जङ्गे पूजयामि, अकुवाहनाय नमः। ऊरो पूजयामि, ओम हेरम्बाय नमः। कटिं पूजयामि, लम्बोदराय नमः। उदरं पूजयामि, घननाथाय नमः। नाभिं पूजयामि, गणेशाय नमः। हृदयं पूजयामि, स्थूलकण्ठाय नमः। कण्ठं पूजयामि, ओं स्कन्दाग्रजाय नमः। स्कन्धौ पूजयामि, पाशहस्ताय नमः। हस्तौ पूजयामि, गजवक्त्राय नमः। वक्त्रं पूजयामि, विघ्नहन्त्रे नमः। नेत्रौ पूजयामि, शूर्पकर्णाय नमः। कर्णौ पूजयामि, बालचन्द्राय नमः। ललाटं पूजयामि, सर्वेश्वराय नमः। शिरो पूजयामि, विघ्नराजाय नमः। सर्व अंगानि पूजयामि। प्रपूजाम् ओम सुमुखाय नमः। माजीपत्राणि पूजयामि, ओम गणाधिपाय नमः। बृहदीपत्राणि पूजयामि, उमापुत्राय नमः। बिल्वपत्रं पूजयामि,
गजाननाय नमः दूर्वयुग्मं पूजयामि ॐ वंसुवे नमः तत्तोरपत्रं पूजयामि ॐ लम्बोदराय नमः बद्रीपत्रं पूजयामि ॐ गुहाग्रजाय नमः अपमार्गपत्रं पूजयामि ॐ गजकर्णाय नमः तुलसीपत्रं पूजयामि ॐ एकदन्ताय नमः चोतपत्रं पूजयामि ॐ विकटाय नमः करवीरपत्राणि पूजयामि ॐ भिन्नदन्ताय नमः विष्णुक्रान्तिपत्रं पूजयामि ॐ वटवे नमः दाडिमीपत्रं पूजयामि ॐ सर्वेश्वराय नमः देवतारपत्रं पूजयामि ॐ बालचन्द्राय नमः मरुगपत्राणि पूजयामि ॐ हेरम्बाय नमः सिन्धुवारपत्रं पूजयामि ॐ शूर्पकर्णाय नमः जाजीपत्रं पूजयामि ॐ सुराग्रजाय नमः कण्डिकीपत्रं पूजयामि ॐ विभावक्त्राय नमः समीपत्रं पूजयामि ॐ विनायकाय नमः अश्वत्थपत्रं पूजयामि ॐ सुरसेविताय नमः अर्जुनपत्रं पूजयामि ॐ कपिलाय नमः अर्कपत्रं पूजयामि ॐ गणेशाय नमः एकाविंशति पत्रपूजानि समर्पयामि ॐ धोरसिदोर्वदोर्वन्दन्धोर्वदयोस्मान्दोर्वदिदं धोर्वयं वयं धोर्वमस्त्वं देवानामसि धूपमाघ्रापयामि उद्दीप्य स्वजातवेदो भग्नन्निर्निर्मम वशोगस्य मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मानो हि गुंते जातवेदो कामश्वं पुरुषं जगत अबिभ्रदग्नागहि श्रिया मा परिपादय Anybody interested to read the katha in English, please come forward. Anybody wants to do the volunteer? Ganapati Bappa Moria, Mangala Murti Moria. Vinayaka Chaturthi story. Once there lived a demon king by the name of Gajasura. He was named so because he had the form of elephant, Gaja. He performed great penance, tapasya, for Lord Shiva. Shiva, who was pleased with the penance, came to him and offered him a boon, Vara. That demon prayed Lord Shiva as soon as he saw him and then prayed that, "Hey Lord, I would ask you to stay in my stomach as a boon." Lord Shiva, known for his love towards followers, agreed and stayed in the stomach of Gajasura. In the meantime, goddess Parvati, wife of Lord Shiva, who was in Kaliyasam, the abode of Lord Shiva, was getting worried as her husband was not to be seen for many days. She searched and finally found out that Lord Shiva was residing in the stomach of the demon Gajasura. Then she was worried on how to get her husband back and prayed to her brother Lord Vishnu. Lord Vishnu came to Parvati, who narrated the whole story of her husband and requested Vishnu to help in getting her husband back.
Vishnu consoled Parvati and promised that he would get her husband back. Lord Vishnu, along with other deities like Indra, Brahma, etc., hatched a plan of getting Shiva back. As a part of the plan, they decorated Nandi, the bull, and Ganji Redu. This is a part of Andhra tradition where bulls are decorated, trained to make movements according to the music, and gods were disguised as musical instrument players, where all the gods took up different musical instruments. With everything ready, all of them went to the capital city of the demon Gajasura. In the city, they started the show of making the bull move to their music. It was magnificent and started pulling a huge crowd. The fame of the bull play reached Gajasura and he summoned them to his court. In the court, all the gods made Nandi play beautifully, by which Gajasura was impressed and asked the band to go ahead and ask for anything and he would for sure give them. Listening to that, Vishnu said that Ganjidu was no other than Nandi, the vehicle of Shiva, and they were here for Shiva. Listening to that, Gajasura understood that the one who spoke was none other than Lord Vishnu, famous for killing demons. Knowing that he had no other way out but to stand on his word, he once prayed to Lord Shiva and asked one other boon, stating his death was imminent, and so he prayed to Shiva that he made his head to be prayed in all the lokas, Bhu Lokam, Pata Lokam, etc., and that Shiva would should wear his skin as clothes, for which Lord Shiva agreed. Vishnu asked Nandi to pierce the stomach of Gajasura, which Nandi did, and Shiva was out of the stomach of Gajasura. Vishnu then advised Shiva that boons were to be given on discretion and asked him to consider before giving boons to other demons. Then all the gods left, so did Shiva, mounted Nandi, and left to Kailasam. Birth of Ganesha. Knowing the arrival of Lord Shiva, Parvati feels relieved and happy. She performs Abhyangna Snana. This is a form of bath taken by applying oil to the whole body massage until the whole oil gets into the body and then applying Sunipindi flour called Nalugu to body and rub so that the flour peels and takes all the dust. While performing the bath, she prepares a boy with the flour and instills life into it. The child is born and she asks him to be guard at the front door as long as she is bathing and tells him not to let anyone enter the house. The child is now standing as a guard to the door of the house of Parvati. Shiva comes home and tries to get into the home where the child is stopped him. Shiva gets angry and in a fit of rage kills the boy by beheading and burning the head and enters the house. Parvati, who is ready by now, receives Lord Shiva with affection. In the course of talking, the discussion comes up on the boy who was guarding the door. Shiva tells Parvati that he had killed him, upon which Parvati narrates the whole story of the birth of the boy and becomes sad. Shiva repents on what he had done, and the only way that he can bring the boy to life is by attaching a new head. He sends all the soldiers under his command to go and fetch a head of the person who is lying, sleeping, with his head positioned in the north direction. Then all the soldiers go in all the directions and finally return with the head of Gajasura, stating that Gajasura was the only one sleeping with his head kept in the north direction. Hence, it is advised not to sleep keeping the head in the north direction. One more reason being that south is the position of Yama, and no one would want to see Yama as soon as they get up. Shiva then brings back the boy to life by attaching the head of Gajasura and named him Gajanana Ganesha. He was given a rat by the name of Anindyudu as a vehicle. Shiva and Parvati, after few years, had another son by the name of Kumaraswamy. Kumaraswamy became the commander of the army of gods later. Kumaraswamy is also called as Kartikeya, Subramanya, etc. Commander of Vignas. Vigna means
obstacle that would come for any work we would want to do before the work itself gets started. That is, you will get lot of troubles before you start the work, and finally you will not be able to complete the work. Vignas will never allow you to finish the work as expected as by you. Once all the gods, sages, meet Shiva and pray him and ask him to appoint someone as a head to the Vignas, Kumar Swami comes forward and asks his father to give the head of Vignas post to him, as Gajanan is short and fat. But Gajanan Ganesha also wants the post. So Shiva puts them to a test. The test is to go around all the worlds and to bath in all the holy rivers present in those worlds in return. Whoever comes first will be appointed as the head of Vignas. Listening to which, Kumar Swami sits on his vehicle, peacock, and flies for completing the test. Ganesh, on the other hand, feels sorrow, approaches his father, and prays him, saying, "You know that I'm fat, short, and cannot move as fast as Kumar Swami, so I request you to advise me on how to win the competition." Lord Shiva responds to his prayer and says that if you recite the Narayan Mantram and do Prada Krishna to parents, circling around the parents, it is equal to bathing in all the holy rivers. Shiva teaches Ganesha Narayana mantra, and Ganesh, reciting the mantra, does the Pada Krishna to his parents. Because of the effect of the mantra and Pada Krishna, Kumar Swami always sees his brother Ganesh to finish the bath and leave as he tries to enter for a bath in any of the holy river. Kumaraswamy returns to Kailasam and tells his father to forgive him of his ignorance in recognizing his elder brother's capability and requests him to place Ganesha as the head of Vignas. So Ganesh is named as the head of the Vignas and hence called Vigneshwar, Lord of Vignas. This ceremony of placing Ganesha as the head of Vignas was done on Bhadrapada Sudha Chaviti, and from that day on, it is celebrated as Vinayaka Chaturthi or Ganesh Chaturthi or Vinayak Chaviti. All the people, gods, sages, etc., of all worlds presented Ganesha with lot of different food items like bananas, coconuts, sweets like laddu, kudumulu, etc. And Ganesh ate most of them. He, wishing to seek the blessing of his mother and father, goes to them with his big stomach. He tries to take their blessing by doing Shashtanga Namaskaram, where in the person lies down on the floor with his hand stretched over the forehead and his face, stomach, legs all touch the ground. But because of his stomach, if he tries to keep his hand on the ground, his legs would raise, and if he places his legs on the ground, his hands would raise. Looking at the way Ganesha was doing the namaskara, the moon which resides on the head of Lord Shiva laughs, and Ganesha is subjected to drishti, also known as nazar in Hindi. You can say as to look at one to cause harm to him, feel jealous and would like that some harm would happen to him, which causes the stomach of Ganesh to break open and Ganesha dies. Looking at his head, looking at his dead son, Parvati gets angry and then puts a curse on Moon that as her son died because of the drishti by Moon, the one who would from now on see Moon will be falsely alleged, blamed, Paninda, causing pain to them. That is, the one who would look Moon would be held responsible for the bad deed or crime that they have not committed. At the same time, the famous seven sages, Saputra Rishis, were doing Prada Krishna, circling around the fire along with their wives. The fire god Agni Deva gets attracted to the wives of sages and would want to spend time with them. But afraid of the curse that the sages would give if he tries to do it, he refrains himself. Knowing this, Swahadevi, the wife of Lord Agni, tries to bring happiness to her husband, transform herself to look like the wives of sages, and spends time with her husband. Swahadevi transforms to look like the wives of six sages except for Arundhati, the famous Sati. The seven sages by chance see this and think that it is their wives that
are present with Lord Agni and leave their wives. This was the result of the wives seeing the moon and after the curse of Parvati. The wives of 7 sages go to Brahma and pray him of their innocence. Shiva, who knows everything, calls for the 7 sages and pacify them by narrating the truth that it was in fact the wife of Agni who transformed herself to look like the wives of sages. Then Brahma, along with all the other gods, to Kailasham and gives life to the dead Ganesha and prays Parvati to withdraw her curse. Parvati, relieved of the pain, is happy to see her son, and so she reduces the intensity of the curse by stating that the curse would prevail only on the day her son was dead because of moon dishti. That is on the 4th day of Bhadrapad Masam. Bhadrapad Sudha Chaviti. So people from that day onwards refrained themselves from looking at the moon on the day of Vinayak Chaviti. This went for some time. In Dwapara Yuga, there are 4 yugas. One day, Sage Narada came to see Lord Krishna in the city of Dwarka. He informed him of the curse of Parvati, narrated the whole story, and advised him not to see the moon today as it was Vinayak Chaviti. Krishna made this matter to be known to all the people of his kingdom, and he also was careful not to look at the moon. Krishna loves to drink milk and so goes to the cow yard and milks the cow, and when he is about to drink the milk, he sees the reflection of moon in it. He immediately remembers what Narada had said and prepares himself to face the false allegation he might be dragging into. Some time passes by, and once a person by the name Satrajit visits Sri Krishna and shows him a diamond by the name of Samantaka Mani, which was given to Satrajit by the Lord's son. The speciality of the diamond being is gives out 8 kgs of gold every day. Then Krishna asks Satrajit to give to the king for the best use for the welfare of the people. But Satrajit refuses and Krishna lets it go. Once Prasena, the brother of Satrajit, goes hunting wearing the diamond. Looking at the diamond and presuming it to be meat, a lion attacks and kills Prasena and takes the diamond. A bear has a look at the diamond with a lion and fights with it and takes the diamond to his home, which is a cave, and ties it to the cradle in which his daughter is sleeping for her to play. The next day, as Prasena doesn't return, Satyajit blames that Krishna has killed his brother and taken the diamond, as he has refused to give to Krishna. Listening to which Krishna understands that this blame was due to looking at the reflection of the moon in milk during Vinayak Chaturthi. In order to free himself of the blame, Krishna inquires on what happened and goes to the forest looking for Prasena. In the forest, at one place, he finds the dead body of Prasena and footmarks of a lion. He follows the footmarks of lion and after some time comes to a place where he sees that there has been a fight between a lion and a bear. He then follows the footsteps of the bear and reaches to the cave of bear. Krishna enters the cave and sees the diamond tied to the cradle. He tries to take it and the girls start crying, hearing which the bear comes and attacks Krishna. Krishna fights back with the bear. The fight goes on for 28 days and the bear loses all its energy and realizes that Krishna is none other than Rama. The bear is none other than Jambavanta. Jamvan, the king of bears, and is aide of Rama in Treta Yuga. He then remembers how, after the war with Ravana, Rama grants a boon to Jambavant, and Jambavanti foolishly asks for a duel with Rama, which Rama grants and says that his boon would be fulfilled later, and it is known that Krishna has come to fulfill the boon, and both Rama and Krishna are the avatara forms of Lord Vishnu. He then prays to Krishna, who relieves Jambavant of all the pains. Jambavant, along with the diamond, also gives him his daughter Jambavati, and requests him to accept her as his wife. Krishna agrees and returns to Dwarka along with the diamond and the girl. He summons Satyajit, returns the diamond, and narrates him the whole story.
Listening to which Satyajit repents and offers Krishna not only the diamond but also his daughter Satyabhama. Krishna rejects the diamond and accepts Satyabhama as his wife. All the people, sages, then pray to Krishna, and tell him that because you are the Almighty, you were able to prove your innocence. But what about normal people like us? People show us some means to overcome the blame if we look at the moon on Vinayak Chavati. Krishna, pleased by the prayers, gives a boon that those who perform the Ganesh Puja and would listen to the story of birth of Ganesha and the story of Samanta Kamini and put akshantalu, rice which is prepared by mixing it with pasupu, turmeric, and are used to do puja on their heads would be freed from the curse if they accidentally see the moon. So this concludes the Vinayaka Vatkada. Now we will have bhajans. In parallel, Pujariji will do the Sankalpam for Archana. So whoever is interested in performing Archana, please come over here and do Sankalpam. And after the bhajans and Aarti, every year we have a special event planned on Ganesh Chaturthi. We have a laddu that is specially made on every year, and we will have an auction for this after the Aarti is done, and before Aarti, okay, before Aarti, and all the proceeds will go to the temple for the maintenance and support. And it is also believed that this special prasad will bring good luck, health, wealth, and prosperity. So please do participate in this auction and support the temple, at the same time seek the divine blessings. Hari Om. Thank you. Who are interested, please come forward to do the bhajans, please. For Ganapati bhajans. विनायक नमो नमः गणपति पप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति पप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति पप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति पप्पा मोरिया ओम गम गणपतये अष्टविनायक नमो नमः पति पप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः
सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितम् महागणपतिं मनसा स्मरामि देवसुतं देवसुतं कुहकुवानुतं देवसुतं कुहकुवानुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं महानाट्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदिकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दिता महागणपतिं मनसा. Thank you. गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं गणेश शरणं शरणं गणेश शरणं गणेश
गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं गणेश वागीश शरणं शरणं वागीश वागीश शरणं शरणं वागीश वागीश शरणं शरणं वागीश वागीश शरणं वागीश वागीश शरणं शरणं वागीश वागीश शरणं शरणं गीश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं गणेश ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश 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 शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश वागीश शरणं शरणं वागीश वागीश शरणं शरणं वागीश ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय नमः गणेश शरणं शरणं गणेश श्रीगणनाथं भज रे श्रीगणनाथं भज रे सरिगम पद निध निध पम गरि सनि श्रीगणनाथं भज रे चित्तपरा शक्तियुतं श्रीगणनाथं भज रे चित्तपरा शक्तियुतं श्रीगणनाथं भज रे चित्तपरा शक्तियुतं श्रीगणनाथं भज रे आगमादिसन्नुतं अखिललोकपूजितम् आगमादिसन्नुतम्
अखिललोकपूजितं भोगिशालि भावितं योगिशालि सेवितं भोगिशालि भावितं योगिशालि सेवितं रागद्वेषादिरहित रमणीय हृदयमुदितम् रागद्वेषादिरहित रमणीय हृदयमुदितं श्रीगुरुगुह सन्मुदितं चिन्मूलकमलास्थितं रागद्वेषादिरहित रमणीय हृदयमुदितं श्रीगुरुगुह सन्मुदितं चिन्मूलकमलास्थितं गमरि सरि गमप नीदप माप सनि स रे गमगरि स सानिदप मगरि स श्रीगणनाथं भज रे चित्तपरा शक्तियुतं श्रीगणनाथं भज रे. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा लंडून का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तके सिंदूर शोभे मूषक की सवारी मस्तके सिंदूर शोभे मूषक की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा गणेश जय गणेश देवा अंधन को आँख देत कोडिन को काया अंधन को आँख देत कोडिन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश देवा चढ़े फूल चढ़े मेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा मंगल को व्रत करे और करे सेवा मंगल को व्रत करे और करे सेवा सब चिंता दूर करे सिद्ध गणेश देवा सब चिंता दूर करे सिद्ध गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा गणपति बाबा मोरया नहीं दोनों ने साथ बोलो आती नहीं है ना
ఓం నమో విఘ్నరాయ సర్ పాహి పాహి గజానన పార్వతి నందన గజానన పాహి పాహి గజానన పార్వతి నందన గజానన లంబోదర హే గజానన లంబవురగధర గజానన లంబోదర హే గజానన లంబవురగధర గజానన పాహి పాహి గజానన పార్వతి నందన గజానన పాహి పాహి గజానన పార్వతి నందన గజానన సూక్ష్మనేత్ర గజానన అనంతకర్ణ గజానన సూక్ష్మనేత్ర గజానన అనంతకర్ణ గజానన పాహి పాహి గజానన పార్వతి నందన గజానన పాహి పాహి గజానన పార్వతి నందన గజానన మూషిక వాహన గజానన మోదక ప్రియ గజానన మూషిక వాహన గజానన మోదక ప్రియ గజానన పాహి పాహి గజానన పార్వతి నందన గజానన పాహి పాహి గజానన పార్వతి నందన గజానన వామన రూప గజానన విఘ్న వినాశక గజానన వామన రూప గజానన విఘ్న వినాశక గజానన పాహి పాహి గజానన పార్వతి నందన గజానన పాహి పాహి గజానన పార్వతి నందన గజానన మహేశ్వర పుత్ర గజానన మాం పరిపాలయ గజానన మహేశ్వర పుత్ర గజానన మాం పరిపాలయ గజానన పాహి పాహి గజానన పార్వతి నందన గజానన పాహి 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 గజానన పార్వతి నందన గజానన పార్వతి నందన గజానన పార్వతి నందన గజానన 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 గజానన
मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकं मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नटाशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नटाशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नमामि तं विनायकम् नटेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्झरं नटाधिकापदुद्धरं नटेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्झरं नटाधिकापदुद्धरम् निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं त्वमाश्रये परात्परं निरन्तरम् परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं धरेतरोदरं वरं वरे भव त्रमक्षरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं धरेतरोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरम् करं चमाकरं मुधाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वनम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वनं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तमन्तकान्तकान्तम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 
कृन्तनं नितान्तकान्तदन्तकान्तमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्य रूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमे योगिना तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं निरन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्. Hari Om everyone. May I have your attention please? Thank you. Happy Ganesh Chaturthi to all of you. Thank you. So we're going to have a fundraising here. So as you all see, there is a big laddu here. So we're going to auction that laddu. It's a fundraising for Hindu Temple of Rochester, for this temple. Usually it says that whoever gets this laddu, they will get all the good lucks. So one year I remember there are some RIT kids.
I don't want to say that, okay, you are all RIT kids, so I'm just trying to put a light on you guys. So some kids, they all came here for Ganesh Chaturthi. We had this laddu auction going on. So 4 kids, they bought this laddu together, and they have donated some money towards this laddu, and with no time, they all got jobs. Honestly, they even came to Pujari ji and they shared this news. So, hint, hint for those who are looking for jobs. Oh, yes. So, soon, whoever is looking to get married, they're going to get married. That's what Rajesh ji says. So, jokes apart, whoever gets this laddu, they will be taking home not just the laddu, the good luck, the prosperity, all the best wishes from Lord Ganesha. So, whoever is in line to take Prasad, please come and have a seat. We're going to give that after Arati. Now you can focus on laddu auctioning here. So we will be starting the laddu auction with $51. $51. Yes, please. Anyone else? More than 51? I have one person here. 100. Any other takers? More than 100? 101. Good. Nice way to go. Thank you. 101. Anyone interested? Going 500. Thank you so much. More, yeah. More, yeah. Anybody else? More than 500. 501. Thank you. Yes. 601. Thank you so much. 601. Yes. 701. 701. Any more? Anyone else? 701 so far. You know, if you are from Hyderabad, this is a big deal. In Hyderabad, people fight for this. There are 2 big parties, 3 big parties, political parties, they fight for this. They say whoever gets this, their party will win. So there is lot of like bribing going on behind the scenes and all that, but nothing works in front of God. Of course, whoever has to get, they get it. But this is what goes on there. So, any more? 700 so far. We have $700. Who is saying that? 701. 701. Thank you. 701. If anyone wants to take some time, I can give you some time. No hurry. If you want to phone a friend, feel free. These days, everything runs virtual, right? So call your friends, California, anywhere else. Ask them if they're interested. I think we are going with 701. Mehul Patel, right? Mehul Patel and Praveena Patel. Thank you so much. We appreciate your donation. It took 2.5 hours to make this big laddu.
So Pujari ji has a suggestion. We don't want to discourage anyone here. The person who said 601, if they wanted to get, there is one laddu which is in Lord Ganesha's hand. It can come right from his hand to your hands. So if you are interested, please let us know. Now Pujari ji will be doing Archana. Hello. Everybody be silent. Each name, everybody repeat Ganeshaya Namaha. Om Marasiddhi Vinayaka Swami Padarun Stottara Satanamarchanam Garishve. Om Gajananaya Namaha. Om Ganadhyakshaya Namaha. Om Vignarajaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Vinayakaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Dvaimaturaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Pramukhaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Sumukhaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Krutine Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Supradipaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Sukanitaye Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Suradhyakshaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Surariknaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Mahaganapataye Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Manyaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Mahakalaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Mahabalaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Herambhaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Lambajadharaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Rasvagrivaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Mahodaraya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Adotkadaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Mahaviraya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Mantrine Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Mangalaswaraya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Pramadaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Pratamaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Prajnaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Vignagatre Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Vignahatre Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Vishwanetraya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Virat Pataye Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Sri Pataye Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Bhakpataye Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Srungarine Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Asita Vatsalaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Shivapriyaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Shigragarine Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Sasvataya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Balaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Bhavatmajaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Purana Purushaya
नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ पोष्णवे नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ पुष्करोक्षितवारिणे नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ अग्रपूज्याय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ अग्रगामिने नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ मन्त्रकृते नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ चामिकरप्रभाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ सर्ववस्त्रे नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ सर्वोपन्याय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ सर्वकर्ते नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ सर्वनेत्राय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ सर्वसिद्धये नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ पङ्कजहस्ताय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ कुमारगुरवे नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ अक्षोभ्याय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ कुञ्जरासरबन्धनाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ प्रमोदातनयनाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ मोदकप्रियाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ कान्तिमते नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ धृतिमते नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ कामिने नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ कविताबलप्रियाय नमः ॐ गणेशाय ॐ नमः ब्रह्मचारिणे नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ ब्रह्मविद्यादिदेवताभ्यो नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ जिष्णवे नमः ॐ गणेशाय ॐ नमः विष्णुप्रियाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ भक्तजीविताय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ चिदमन्मदाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ यक्षकिन्नरसेविताय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ गङ्गासुताय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ गम्भीरनिदाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ वटवे नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ अभिष्टवरदाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ ज्योतिषे नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ भक्तनिधये नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ भावगम्याय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ मङ्गलप्रदाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ अप्राकृतपराक्रमाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ सत्यधर्मणे नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ सुखये नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ महेशाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ दिव्याङ्गाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ मणिकिङ्किलीमेखलाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ नमस्तदेवतामूर्तये नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ सहिष्णवे नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ विघातकारिणे नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ विश्वाकृते नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ विश्वरक्षकृते नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ कल्याणगुरवे नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ उन्मत्तवेषाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ अपराजिते नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ अक्रान्तजितभक्त्रे नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ विघ्नेश्वराय नमः ॐ गणेशाय नमः हरसिद्धिविनायक स्वामी पादारविन्द्योष्टोत्तर शतनामार्चनं समर्पयामि समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु सकल विद्यार्थिनः उन्नत विद्या सकल विद्या अनुग्रहतावलित समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु
we are going to do the Bhog Naivedyam. There is one bhajan. After that, we will do the Aarti. After the Aarti, everybody make a line and have the Tirtha Prasad. And you can thank you. And this program is going up to 1 week. Next coming Sunday evening at 4:30, we are doing to Ganesh Visarjan in Temple Pond only. Everybody come and join for the procession and enjoy the function. And every day evening 6:30 to 7:30. If anybody interested, you can come and sing the bhajans of Lord Ganeshas. And after the Archana and Bhog and Aarti. You can make prasad and bring it. We'll do the Naivedyam and we can distribute to Bhaktas. Thank you. जय विघ्नेश्वर नमो नमो जगद्रक्षका नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जगद्रक्षका नमो नमो जय कर शुभ कर सर्व परात्पर जगदुद्धारा नमो नमो जय कर शुभ कर सर्व परात्पर जगदुद्धारा नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जगद्रक्षका नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जगद्रक्षका नमो नमो मूषिक वाहन नमो नमो मुनिजन वंदित नमो नमो मूषिक वाहन नमो नमो मुनिजन वंदित नमो नमो माया राक्षस मदापहरणा मन्मदारि सुत नमो नमो माया राक्षस मदापहरणा मन्मदारि सुत नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जगद्रक्षका नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जगद्रक्षका नमो नमो विद्यादायक नमो नमो विघ्न विधारक नमो नमो विद्यादायक नमो नमो विघ्न विधारक नमो नमो विश्व सृष्टि लय कारण शंभो विमलात्रा नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जगद्रक्षका नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जगद्रक्षका नमो नमो गौरी प्रिय सुत नमो नमो गंगानंदन नमो नमो गौरी प्रिय सुत नमो नमो गंगानंदन नमो नमो गंधर्वाद्भुत गान विनोदा गणपति देवा नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जगद्रक्षका नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जगद्रक्षका नमो नमो नित्यानंद नमो नमो निज फलदायक नमो नमो नित्यानंद नमो नमो निज फलदायक नमो नमो निर्मल पुरवर नित्य महोत्सव रामनाथ सुत नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जगद्रक्षका 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 नमो नमो. If anybody would like to sing a bhajan, please come forward. Let's recite this together.
ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः ॐ गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः ॐ गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः ॐ गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः ॐ गं गणपतये नमो नमः ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः ॐ गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः ॐ गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः ॐ गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति बप्पा मोरया ॐ गं गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया
गङ्गनपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति पप्पा मोर्या गं गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति पप्पा मोर्या ॐ गं गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति पप्पा मोर्या ॐ गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः श्री गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः ॐ गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः ॐ गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति पप्पा मोर्या ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति पप्पा मोर्या ॐ गं गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हे गणपति पप्पा मोर्या I have a small announcement here. I think most of you will be excited. I see a lot of students here. If they have any, we are going to have a Consulate General of India in New York. We are going to have a camp here in Hindu Temple of Rochester. If you have any questions regarding visa, there will be like counselor services here at the temple, and it's an off-site camp. So please, you can come here and you can ask questions, and there will be you can ask questions regarding like a passport services or OCI services. I know it's not applicable to you, but I'm just telling whoever is interested, OCI services, renunciation services, police clearance certificate, GP service, and visa services. So if you have any questions, please come to the temple and all your questions will be answered. And it is going to be on September 30th from 9 a.m. to 2 p.m. September 30th, 9 a.m. to 2 p.m. Everybody please remain seated. We will going to do the Aarti. Everybody please remain seated. We are going to do the Aarti. Then you can take Prasad and Tirtham. Om Sukhagarda Dukharda Varta Vignache Nurve Purve Prem Gropajayache Sarvangi Sundara Utishendurache Kanthi Jhalke Mala Mukta Balache Jai Deva Jai Dev Jai Mangalamurti Ho Shri Mangalamurti Darshan Matre Mana Swarne Matre Mana Kamana Purti Jai Deva Jai Dev रत्ना खचितावरा तुजगौरी कुमरा चंदनाची ऊटी कुम कुम केशरा हीरे जडिता मुकुटा शोभतोबरा ऋण झुण दीनु बोरे चरणी घागरिया जय देव
जय मंगलमूर्ति हो श्री मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरल सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ति हो श्री मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को धोंदित लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहीं न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय जय श्री गणराज विद्या शुभदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव अष्टौ सिद्धिदाजी संकट को बैरी विघ्न विनाशन मंगल मूषक अधिकारी कोटि सूर्य प्रकाश ऐशी छवि तेरी गंडस्थल मदमस्तक शोभे शशि बिहरी जय देव जय जय श्री गणराज विद्या शुभदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव भाव भगत से जो कोई शरणागत आवे संतत संपद सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निशकिन गुण गावे जय देव जय जय श्री गणराज विद्या शुभदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर परम ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया मैं किस विध मिलो कृपा मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे
दीनबन्धु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ बढ़ाओ अपनी शरण लगाओ द्वारे पड़म तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ One small announcement. When you are getting out from your place, please go do Namaskaram for Ganesha, and from there you come here and take the Tirtham from here. After that, you collect one box from there, and you're not supposed to eat here. Please go downstairs to eat. And seniors and pregnant ladies and devotees with infants, they please come forward first, then after that anyone else. Thank you.
Mehul Patel and Praveen Patel. Please, you can come to Pujari ji's table to distribute the laddu.
भगवान सुन लो विनती दया निधान, सुन लो विनती दया निधान। एक बार तो घर में पधारो, एक बार तो घर में पधारो, हे गजानन भगवान सुन लो विनती दया निधान, सुन लो विनती